Hello and welcome everybody. So in today's class, we'll be learning about formatting in Excel part 2 and I'm your instructor Divya Thakur. आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जो कल हमने आइकन देखा था, फॉर्मेटिंग की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में and also about how to import and export data in our Excel spreadsheet. So let's get started. Now I have taken a sample data which shows some names of the Pokemons, their types and their speeds. इस पे हमें आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस टेबल पे यूज़ करनी है. सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, ना केवल डेटा को विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा बनाता है बट ऑल्सो हम इस पे कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. So it can perform formatting on a subset of the original data as well as on all of the data and can also perform some logical operations. So हम use करते हैं suppose ये column को which is a subset of the original data set and इस पे conditional formatting use करते हैं. So as you can see इसके अंदर है highlight cell rules और ये सब logical operations हैं, greater than, less than, between, equal to, text that contains a date occurring, duplicate values and there are some more rules. So हम देख लेते हैं greater than. So यहाँ पे मैंने greater than speed मुझे देनी है. So I want some speed which is greater than 70, इसने by default ले लिया and मुझे वो green में चाहिए. So I'll click on OK. So आप देख सकते हैं कि इन सारे Pokemons की speed is greater than like Charmeleon, Charizard, Blastoise. So इन सब की speed है greater than 70. Now let me undo this. So now अब मैं ये column select करती हूँ and we are clicking on conditional formatting, highlight cell rules. अब देख लेते हैं text that contains. So अगर मुझे लिखना है text that contains W, so और मुझे इसे fill करना है with suppose yellow fill. Click on OK. इस पे भी use कर लेते हैं conditional formatting and highlight cell rules, text that contains, and I'm gonna write T, fill with green, click on OK. So as you can see यहाँ पे वो सारे cells highlight हो गए जिनके names में T आ रहा है. अब चलते हैं top and bottom 10 bars को select करने पे. So I'm just gonna be selecting this column over here, conditional formatting, top bottom rules. अब मुझे top 10 items चाहिए इस speed में. So मुझे वो green में चाहिए and also I want the bottom items and वो मुझे red में चाहिए. So as you can see कि top 10 जिनकी speeds हैं वो green में highlighted हो गए and bottom 10 जो हैं जिनकी speeds है वो red में highlight हो गए. So इससे आप अपने data को काफ़ी अच्छी तरीके से visualize कर सकते हैं. Now let's move on to gradient and solid fill. So इस column को select कर लेते हैं, conditional formatting, and these are your data bars. So आप देख सकते हैं ये gradient fill है. Gradient fill क्या करता है, percentages निकालता है of these values. So maximum value को select करता है, जैसे 101 यहाँ 110 यहाँ पे maximum है and इसके basis पे percentage निकालता है and इन सारे values को arrange कर देता है. तो आपको उसके respective data bars यहाँ view हो जाते हैं. जैसे आप देख रहे हैं if I selected this 110 100% पे है highlighted, ये रहा 101, ये रहा 100 and so on percentages wise बाकी के सारे cells highlight हो रहे हैं. So let me select this again, data bars, solid fills भी यहाँ available है. So एक solid fill select कर लेते हैं. इनमें सिर्फ विजुअलाइजेशन का डिफरेंस है सॉलिड फिल्स एंड ग्रेडियंट फिल्स में
एंड इनका जो वर्किंग है सिमिलर है. सो 110 पे फिर से 100% फिल हो रहा है, एंड 100 पे उससे कम, 100 पे उससे कम, एंड सो ऑन. Now let's see color scales. So I've selected this column over here. So color scales क्या करती हैं? They arrange the values in a color formatted manner. So green, suppose green जो values हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, उनसे जो कम values हैं वो yellow में हैं, and सबसे कम values red में आपको show हो रहे हैं. अब यहाँ पे सिर्फ 2 कलर्स में भी है, ये 3 कलर्स में भी है, ग्रीन वाइट रेड, अगेन रेड येलो ग्रीन, एंड 3 कलर्स में है एंड 2 कलर्स में भी है, जैसे रेड एंड वाइट. रेड वाइट इज इंक्रीमेंटल इन नेचर बिकॉज जो लोएस्ट वैल्यू है वो लाइटर कलर से यहाँ पे आ रही है. सो सपोज 45 लोअर वैल्यू है, सो लाइटर रेड कलर में आ रही है. 30 उससे भी लोअर वैल्यू है, इवन लाइटर कलर में आ रही है. 35 भी थोड़ा वाइट में आ रहा है, 40 भी थोड़ा वाइटिश में आ रहा है, बट यहाँ पे 101, 100, 110 थोड़ा डार्क रेड में आ रहा है. एंड वाइट ग्रीन कलर स्केल जैसे है, दिस इज डिक्रीमेंटल इन नेचर बिकॉज जो लोअर वैल्यूज हैं लाइक 45, 45 अगेन 30, ये सारे डार्क ग्रीन कलर में हैं, एंड 101, 100, 110 जो हायर वैल्यूज हैं वो वाइट में हैं. सो दिस इज डिक्रीमेंटल इन नेचर, दिस कलर स्केल. जो अभी हमने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के स्केल्स देखे, similar representation can be used using icons also. So if I'll select this column, go to conditional formatting, and ये रहे icon sets. So if I'm gonna be choosing these 3 sets, which means कि जो कम values हैं वो red से depict हो रही हैं, medium values yellow icon से depict हो रही हैं, and highest values green icon से depict हो रही हैं. So the values that are high are oriented towards the top. Next, we'll move on to format as table option. So मैं इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ. एंड देन वील गो टू दिस फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन. सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू फॉर्मेट योर टेबल. सो एज यू कैन सी, आई कैन चूज एनी वन ऑफ दीज ऑप्शंस और दीज वंस एज वेल. सो ऐसे आप विजुअली अपनी टेबल को काफ़ी अपीलिंग दिखा सकते हैं. सो आई विल जस्ट बी चूजिंग दिस वन, थोड़ा ज़्यादा विजुअल अपीलिंग है फॉर मी. सो दिस इज़ नोन एज सेल फॉर्मेटिंग. सो दिस इज़ यूज टू प्रोवाइड वेरियस एक्सेंट्स टू द इंडिविजुअल सेल्स. जैसे आप देख सकते हैं वाइट हैं, कुछ ब्लू हैं, बेस्ड ऑन वेरियस ऑप्शंस दैट वर हियर इन द फॉर्मेट एज टेबल टैब. नाउ अगर आपको पूरी होल रो को सिलेक्ट करना है, देन यू कैन यूज शिफ्ट प्लस स्पेस बार. सो आई एम जस्ट गोना यूज इट हियर. सो ये रो सिलेक्ट हो गई. एंड अगर आपको पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना है, सो जस्ट प्लेस योर cursor anywhere on any cell and use control plus space bar. So shift plus space bar is for selecting a row, while shift plus space bar is, control plus space bar is used to select a column. Next हम आते हैं importing and exporting data in Excel. So that can be achieved using these following steps. आप फाइल टेबल पे जा सकते हैं, and then you can click on this export tab over here. And आप ये जो फाइल है अपनी which was in this format, इसे PDF फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं. So I'll just show it to you. So मैंने इसका PDF बना लिया and I am publishing it on my desktop. So now you can see that your Excel sheet is available in a PDF format over here. Also,
there are options to import data into this Excel workspace of yours. So for that, click on this data tab and यहाँ से आप from access, from web, from text यूज़ करके आप files यहाँ से ले सकते हैं. So from other sources as well, like from SQL Server, from analysis services, from OData data feed, from XML data import, from data connection wizard, from Microsoft Query. And ये आपको बता देगा if there is a server on your system, so an existing connection से भी आपको ये data दे देगा. So if I'll just use from web, तो ये मुझे बताएगा कि आपको data कहाँ से चाहिए. And if I'll just go here and click on import, तो मेरे पास वो data यहाँ आ जाएगा. I'm clicking on new worksheet and ये वो सारा उस पेज का डेटा मेरे पास आ गया है. Similarly, from किसी टेक्स्ट फाइल से भी आप उसे यहाँ पे ला सकते हैं. But please do remember that Excel has some limitations in reading data, and it may not be able to read data from all the data sources with equal accuracy. So it would require human intervention in some cases. So this is all. Thank you for watching. So this is all. Thank you for watching.